It's fully funded, which means आपका travel cost funded है, आपका stay funded है, the accommodation, food, as you said, food, drinks भी provide by the accommodation, तो आपका expense कुछ भी नहीं होता. But you don't need any education knowledge, you don't need anything else. अगर that's also why कि इसका मकसद basically है to bridge cultural gaps. Assalamu alaikum guys, hope all of you are fine. I am with Hamza bhai. He was one of the members of organizing team here in Old Mark, the project which I attended. तो हमजा भाई मैंने जब की वीडियो अपलोड किया ना, मुझे बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे और हम किस तरह अप्लाई करें ताकि सिलेक्शन के भी ज़्यादा चांसेस हों. तो मतलब मैं उन्हें इतनी अच्छे से ये चीज़ नहीं बता सकता, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ. तो पहले बल्कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर इस पे आते हैं. मेरा नाम as I said Hamza है, and I'm originally from Pakistan, लेकिन मैं Netherlands में रह रहा हूँ for the last 5 years. तो पिछले 2-3 साल से मैं Erasmus projects में भी involved हूँ. वैसे generally I'm a mechanical design engineer, so this is more of a passion project on the side. So yeah, that's my introduction. Yeah. So it was great seeing you here. The way you are contributing in the team, like it was an inspiration for us. Thank you really so much. inspired Thank us. you so much. तो चलें अब उस पे ही आ जाएं कि किस तरह मतलब लोग अप्लाई कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स, मतलब उन्हें कोई वेबसाइट ऐसी जहाँ से उन्हें ये मिलेंगे, और सेलेक्ट होने के लिए क्या मतलब फॉर्म फिल करते हुए उन्हें चीज़ माइंड में रखनी चाहिए जो कि मतलब आप सेलेक्ट करते हो आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करती है या initially it's काफ़ी simple criteria. So first of all, if you want to apply, you can search on Google or whatever. Erasmus plus Youth Exchanges. Okay. So generally, if you're starting out, the youth exchanges are the best way to start out. ये जिसमें आपने participate किया था, ये भी youth exchange थी. yes. तो उसमें different organizations हैं. आपको basically nationality नहीं चाहिए होती, so it's open for everyone. Okay. लेकिन आपको residence permit चाहिए होता है. जिस country में आप reside कर रहे हो, आप वहाँ के participant बन सकते हैं. जिस तरह से Italy से participant है, they don't have to be Italian, but they need to be living in Italy. तो इस तरह से है. अब वहाँ पे आप देखें, और ओपन कॉल होती है बहुत ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग देख रहे होते हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए. और एप्लीकेशन में व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ वी टारगेट पीपल विद फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़. तो जो लोग पहले Erasmus प्रोजेक्ट्स पे नहीं जा सकते, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती ट्रैवलिंग की, उनको हम जनरली प्रायोरिटाइज करते हैं. तो दैट्स हाउ यू कैन से फॉर एग्जांपल दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड यू डोंट हैव दैट मच आउटरीच विद से स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड और इस तरह से. तो with fewer opportunities, जिनको जो opportunity नहीं मिलती आने के लिए, we try to select those participants because this is also the goal of Erasmus projects. Alright. तो अब आपके आगे भी प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, तो आप वो कोई स्पेसिफिक लिंक मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का उन्हें पता चलता रहे. For sure. नहीं, जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है नेदरलैंड्स में, I can share the link. But overall in general, if you search Erasmus plus Youth Exchanges, so you can see projects all over. जो हम host करते हैं वो नेदरलैंड्स पे होंगे of course. But I can share the link. You can put it in your description for sure. और एक और confusion है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या कोई भी कर सकता है? नहीं, they're open for everyone. You don't have to be a student. Only criteria youth exchanges के लिए होता है कि your age has to be between 18 to 29. लेकिन one person in each delegation जो कि group leader होता है, वो 29 से ऊपर भी हो सकते हैं. But you don't need any education knowledge. You don't need anything else. अगर that's also why कि इसका मकसद बेसिकली है टू ब्रिज कल्चरल गैप्स और यूथ को टॉपिक्स के बारे में लाइक इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ और एक सस्टेनेबिलिटी उनके बारे में इन्फॉर्म करना है. तो यू डोंट नीड टू हैव अ बैचलर्स, यू डोंट नीड टू बी स्टडीइंग. इट्स ओपन फॉर एवरीवन टू जॉइन. एंड इज इट ऑलवेज फुली फंडेड लाइक दिस या मतलब पार्शली फंडेड भी होता है ये भी, और बेनिफिट्स थोड़े एक्सप्लेन कर दें. हाँ, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स फुली फंडेड, विच मीन्स आपका ट्रैवल कॉस्ट फंडेड है, आपका स्टे फंडेड है, द अकोमोडेशन, फूड, एज यू सेड, फूड, ड्रिंक्स भी प्रोवाइड बाय द अकोमोडेशन. तो आपका एक्सपेंस कुछ भी नहीं होता. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व क्योंकि आप डिफरेंट नेशनलिटी से इंटरेक्ट कर रहे हो. तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट. दैट्स व्हाई आई डू इट बिकॉज आई फील कि a lot of people learn a lot without realizing what they're learning. So when you go back, when you come to a second project, you see how different you interact with people. Yeah, really, even I learned a lot. मैं अपना एक्सपीरियंस अब बाद में शेयर कर लूँगा फुर्सत से. अभी बस मैं निकलने वाला था तो मैंने कहा हमजा भाई को पकड़ो. Sure. Thank you so much हमजा भाई. Thank you so much. I'm happy to share and thank you so much for making the video to make more people know about the projects. Thank you so much. Okay, then see you in the next video, guys. Thank you. Bye-bye.